Good morning, dear children. Today in maths, we will do lesson number 10, play with patterns. Very good morning to all my dear students. Today in the Maths Magic, we'll start our work in the textbook first. We are going to start a new lesson today. That is your lesson number 10. The name of the lesson is Play with Patterns. In this, you have to draw some lovely patterns in your textbook and also in the workbook. And you have to continue the patterns. There are certain form of patterns so that you will continue in the workbook. So let's start our work today. First with today's date. 8/2/2021 and write the classwork. Now patterns around us. There are many different type of patterns that we see around us, but we don't realize that these are the patterns. As in the window we can see, then these barbed wires are there. So these barbed wires also make a pattern. यहाँ पे से जुड़ा हुआ है या ये जो बीच का है, this is the pattern only. Then in the window grills there are a lot of different types of patterns are seen in the window grills. Then this is the pattern which is on the skin of the snake. You can see this pattern, dot and some space, again this dot and some space. So this is also a type of pattern which is on the snake's skin. So in everyday life we see many patterns. For example, we see the barbed wires, the grills of a window and the skin of a snake. Now look around you and first list 3 things in which you see or find such patterns. जैसे कि हम बहुत सारे पैटर्न्स हम कहाँ देखते हैं अपने घर के अंदर. जैसे टाइल्स होती हैं, बाथरूम के किचन के टाइल्स होते हैं, उसमें पैटर्न्स होती हैं. मम्मा की साड़ी में होते हैं, फिर किसी के फ्रेंड के शर्ट में हो गई या किसी के ड्रेस में हो गई. ऐसे सारे डिफरेंट कपड़ों में बहुत सारी पैटर्न्स होती हैं. वैसे हम देखते हैं. Now here draw some patterns with which you find around yourself. आप कुछ ऐसे patterns draw करें जो आपके आसपास हम देख सकते हैं. तो मैंने यहाँ पर एक pattern draw किया. इसको एक ऐसे आप rectangle बना के आप draw करेंगे like this. So one pattern, 2 patterns, different patterns I have drawn here. You can draw any pattern of your choice. Now we move on to page number 145. Now here it is. Hello, I am Pallavi. I live in Jaipur. My city is known for clothes with block prints. Here, have a look at some of the block print designs made by my mother. Now here you can see these are the block prints. Now what is the block prints are made on the clothes. It is a type of designs, method of designing the cloth. How you do it? It's very simple. I'll just explain how the block printing is done. A wooden block is prepared. एक लकड़ी का टुकड़ा लिया जाता है. उसके एक तरफ पर जो है पूरा डिज़ाइन होता है उसको carve किया जाता है. Design is carved out on the one side of the wooden block and then that block is dipped in the color and then pressed on the cloth properly so that we get the designs like this. So these are all the designs that are made by the block. All the designs on the cloth are made with the help of different type of blocks only. जैसे कि अगर फ्लावर बनाया है तो फ्लावर के पेटल्स अगर रेड है और अंदर का जो सर्कल है वो येलो करना है तो एक ब्लॉक जो होगा वो पूरा फ्लावर का होगा. ओनली विद द पेटल्स ऑफ द फ्लावर दैट विल बी डिप्ड इन द रेड color and red flowers will be made. Then only second one more block will be there that will be only of the circle which will be dipped in yellow color and then in between those red colors after the red color dries up that yellow color is done. So it takes a lot of time and बहुत मेहनत का काम है इसको ब्लॉक्स को बनाने के लिए. बट ब्यूटिफुल आर्टिस्टिक वर्क विच इज डन ऑन द क्लॉथ. सो दिस गर्ल इज पल्लवी हु शी इज टेलिंग दैट माई मदर मेक्स द डिजाइंस ऑफ द ऑन द क्लॉथ विद द हेल्प ऑफ द ब्लॉक्स. यू कैन सी दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजाइंस आर देयर. She makes these designs using the blocks again and again. One day I got hold of the blocks and made a beautiful design. Now mother makes the same way. Pallavi also tried to make the design like this. So in this pattern you can see one is up, one is down, one is up, one is down, one is up. So the pattern is same but one pattern upside and one pattern downside. So that way she has made the pattern. Will you see these? You will see that these designs have been made by using the same blocks in different ways. Now one block can be used in different ways. The pattern will be same but the
the net result, the outcome of the design or the output of the design will change once you change the position of the block. Here you can see यहाँ पर ऐसे डिज़ाइन है, यही डिज़ाइन है लेकिन उल्टा है तो अलग लग रहा है. तो वैसे ही अगर आप पोजीशन जैसे जैसे ब्लॉक्स के चेंज करते जाएंगे वैसे ही पैटर्न्स के जो डिज़ाइन जो है, पैटर्न विल बी सेम, डिज़ाइन विल बी सेम, बट द वे इट विल कम आउट विल लुक टोटली डिफरेंट. Can you see a pattern in the way each block is repeated? Now can you see a pattern? A pattern में क्या है, एक up एक down. So this way the pattern is 1 2 3 4, like this way the pattern is has been done. Now we move on to next page. Pictures in the pattern. I have made some patterns of pictures. I have used a ruler for each pattern. अब कुछ pictures के pattern बनाए गए हैं और किससे बना है? With the help of a ruler, that means with the help of a scale the pattern has been made. The rule for the pattern is that there is one girl after every two boys. This is repeated. Now she has made the pattern like this: 2 boys, 1 girl, 2 boys, 1 girl, 2 boys, 1 girl, and the same way the pattern is repeated. So this is the pattern. What is the actual pattern is 2 boys and 1 girl is one set of pattern, and this is continuously being repeated. In the pattern, there is one arrow up and one arrow down. Now, this is the second pattern that has been drawn. You can see one arrow is up, one arrow is down. Again, one arrow is up, one arrow is down. So, the basic pattern is of one arrow up and one arrow down, which has been continuously repeated. And then this is repeated. Now, dear children, we can see that in this first pattern, 2 boys and 1 girl was the pattern, and the same pattern was repeated. In the second pattern, what was the rule? The rule was that 1 arrow up and 1 arrow down. That was the pattern, and the same pattern was repeated. Now, in the picture, there is 1 arrow up and 1 arrow down, then that is repeated. Now, this is your practice time. Given below are some patterns. Figure out the rule for each of the patterns that are given here, and we have to complete this pattern also. Continue the pattern as it is. Now, what is here is 1 red, 1 green, 1 red pot is there, then again green and red pot. What is the pattern? Red pot, green pot and red pot is the pattern, and the same pattern is repeated here. A green pot, red pot, green pot, red pot. Then I have drawn the 3 ones that we have to complete the pattern is green, after red comes the green, then red and then green. So 3 pots we have to draw in color. So that means green and red, that is the pattern that is repeated. In the second one, A, B. So what is repeated? Alphabets A, and B. That is the pattern which is repeated like this. A, B. Again A, B. So this is the way the pattern has been repeated. Now let us look at the next page. What is the pattern? Now in this you can see there's 1 circle, 1 leaf. Then there are 1 circle, 1 leaf was there, 2 more leaves were added, and there here full flower has been made. Now this is the complete 1 set of pattern. This is the pattern. Now here again you can see it is repeated like that. 1 leaf, 1 petal, then 3 petals, and then 1, 2, 3, 4 and 5 petals are there. 1 petal, 3 petals and 5 petals. Now the same thing we have to repeat like here. 1 petal, 3 petal, and then 1, 2, 3, 4 and 5 petals are there. So this way we have to repeat the pattern. Here you can see, here this is 1 triangle is blue, 1, 2, 3 and 4 triangles are there. The square has been divided into 4 triangles. 1 triangle is blue. Now here you can see after this the second triangle is blue. From here this third triangle is blue, and then 4th triangle is blue. So this, the movement of the blue triangle is like this. From it goes from here and then it reaches again here. That means it moves in the anti-clockwise direction. ये जो यहाँ पर जो ब्लू जो ट्राइंगल है जो एक एक बार मूव कर रहा है, अब यहाँ से अब यहाँ पर आ गया, यहाँ से वो इट हैज़ चेंज द पोजीशन हियर एंड फ्रॉम हियर इट हैज़ गॉन बैक टू हियर. और अब वापस कहाँ आएगा? आफ्टर दिस इट विल कम ऑन द फर्स्ट. जो फर्स्ट था दैट विल बी योर 5th वन, जो सेकेंड था दैट विल बी योर 6th वन, द थर्ड वन विल बी योर 7th वन, एंड द 4th वन विल बी योर 8th वन पोजीशन. सेम वे द सेम पैटर्न विल बी रिपीटेड अगेन हियर.
but the movement of this blue triangle here is in anti-clockwise direction. यहाँ से ऐसे गोल घूम रहा है, ऐसे नहीं घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, so it is your anti-clockwise. इस डायरेक्शन में मूव करते हैं तो इसी को क्लॉकवाइज कहते हैं. मतलब घड़ी कैसे चलती है 12 के बाद 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से चलती है. सो इट इज कॉल्ड एज क्लॉकवाइज डायरेक्शन. एंड इफ यू स्टार्ट फ्रॉम हियर दैट इज योर एंटी क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉकवाइज चलते हैं उसका उल्टा. Now here are the semicircles. One semicircle is like this, normal semicircle. उसके बाद ये semicircle rotate करके ऐसे हो गया. अब ये ऐसे हो गया स्टैंडिंग में. अब उसके बाद वापस ये पूरा उल्टा हो गया. उल्टा होके वापस इसका opposite हो गया. That means all the four directions this semicircle has been rotated. Now the first position is already given here. The second position जो यहाँ पर आएगी वो second position आएगी. फिर यहाँ पर आएगी that will be your third position and this will be fourth position. Then again first position will come here and then second position will come here. And this rotation you can see now ऐसे ऐसे था, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे हुआ, and now it goes back to here. That means this rotation of semicircle is in clockwise direction. ये semicircle कैसे किस direction में घूम रहा है? Clockwise direction में घूम रहा है. Now morning, afternoon, evening, night and morning. So morning के बाद क्या आएगा? Morning के बाद afternoon आएगा, afternoon के बाद evening आएगी और evening के बाद night आएगा. So this is the pattern. Morning, afternoon, evening and night. Here morning is already given, so you are just supposed to write afternoon, evening and night. So that is the pattern. Now next is your growing patterns. Now I have made new patterns. इसमें कुछ patterns नए हैं. Now I have just underlined these two groups. That means this is a set of patterns. This is one pattern. This is growing patterns means यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भी एक ऐसा है और एक उल्टा है, एक सीधा भी है, एक उल्टा भी है. This is one set of pattern. Now the pattern is growing. That means the V in this two. Here it was one. It has become two now. In both it has become two now, upward and downward. Then here it has become three, upward and downward. Here so 3 तक का उन्होंने पैटर्न दिया है. Now the patterns we have to complete. Now this will become see 1 2 and 3. Now it will be 4 up 4 down, 5 up and 5 down. We have to complete the pattern like this. Increasing order में आपको पैटर्न को मूव करना है, मतलब बढ़ाना है. So what is here written here? But this pattern keeps on growing. मतलब growing मतलब now next will be 6 up and 6 down, then 7 up and 7 down. But the pattern keeps on growing. It doesn't repeat. मतलब ये repeat नहीं हो रहा है कि जैसे 6 के बाद वापस 1 आया, ऐसा नहीं है. Continuously it has to grow. That means the number of the designs in this oval shape will keep on increasing. That is growing of pattern. So what I does have a rule. अब इसमें भी एक rule है. Can you see the rule and continue the pattern? Yes, I can see the rule and continue the pattern. Just we will take a look at again the rules that we followed in these patterns that we made. In this, one red, one green, one red, one green was followed. Now here what you can see that after 2A, 1B was there. Again 2A, 1B was there. So again 2A and 1B was there. Now here in this you can see that 1 petal, 3 and then 5 petal was there. That means the number of petals started increasing 1, 3 and 5. Here the rotation of the blue triangle was in anti-clockwise direction, and here the direction of the movement of the semicircle was in clockwise direction. And these are the parts of the days that are given here, but they are not given the proper. So we have to arrange them the way they should come. So morning, afternoon, evening and night. And in this you can see the arrowheads that are there. Now one arrowhead is downward and one is upward. So now these arrowheads keep on increasing as we move on to the pattern. So this was the movement of the change of the pattern. The rule of the pattern here was that each time when you will draw, you will move to the next one, the arrows will increase. Now moving on to page. Next page is again here you can see. Here you can see, try these also. 1,
1 is there, then 1 square is there, then 4 squares are there, then 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 squares are there. मतलब 1 के बाद कितने हुए, 4 हुए, मतलब 3 बढ़ गए, फिर 9 हुए, उसके बाद ऐसे इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पैटर्न्स यू हैव टू ड्रॉ लाइक दिस, स्क्वायर्स यू हैव टू ड्रॉ लाइक दिस. यहाँ पर एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल में से 3 हुआ, इसमें से 9 हुआ, इस तरीके से आप ट्राइंगल्स को भी इंक्रीज करते जाएंगे. और हियर यू कैन सी दैट वन लाइन इज देयर, फ्रॉम दिस वन लाइन वी हैव ड्रॉन दिस शेप. My own patterns. In this you have to draw the patterns that you can think of. I have given some examples of how to draw the patterns. After drawing the patterns you have to color these patterns also. आप जब अपने मन से कोई भी आप pattern draw कर सकते हैं, but you can draw the repeated pattern also. You can draw the pattern where the number increases. Increasing order में pattern, जैसे हमने देखा एक arrowhead फिर 2 arrowhead, ऐसे increasing order वाला pattern भी draw कर सकते हैं, या same repeating वाला pattern भी draw कर सकते हैं. Any patterns you can draw, but color it so that they will look nice. Now moving on to next page. Now in this page there is number patterns. Till now what we did was the drawing patterns that we had, or the designs pattern that we can create and do. But now here the thing changes and it comes to the numbers. जो हमारा मैथ्स है, अब वो मैथ्स स्टार्ट होता है नंबर पैटर्न से ना. यहाँ पर बहुत चीज़ केयरफुली ध्यान से देखनी पड़ेंगे. जो नंबर का जो पैटर्न आपको दिया हुआ है वो कैसे दिया हुआ है उसको आप ध्यान से देखिए. देन ओनली यू विल कम टू नो दैट व्हाट टाइप ऑफ पैटर्न इट इज़. नाउ यू कैन सी हियर number pattern. We have made some patterns with pictures. Now यहाँ पर कुछ pictures के साथ patterns थे जो हमने अभी किए. We can make patterns with numbers also. जैसे हम pictures के साथ ये patterns करते हैं वैसे ही हम numbers के साथ भी patterns कर सकते हैं. How it is possible? Look at the example like 21, 41, 61, 81, 101. Now you can see here in this pattern 21. After 21 comes 41. After 41 comes 61. That means between these two numbers there is a difference of 20 numbers. मतलब 21 में अगर हम 20 ऐड करेंगे तो हमको क्या आएगा, 41 आएगा. 41 में अगर हम 20 ऐड करेंगे we will get 61. Again in 61 if we add 20 then 81 will come. In 81 we will add 20, 101 will come. And after 101 in this if we add 20, the last blank that we have to fill will be 121. मतलब कि हर नंबर के बीच में कितने नंबर्स का डिफरेंस है, 20 नंबर्स का अंतर है. और हर नंबर में अगर हम जो भी नंबर्स हैं उसमें अगर हम 20 ऐड करते जाएंगे तो हमारा लास्ट में जो ब्लैंक है उसके अंदर आएगा नंबर 121. Now same way you know the next number, don't you? Now this is the growing pattern. इसको हम क्या बोलते हैं, growing pattern. That means the number keeps on increasing. जहाँ आगे नंबर बढ़ता जाता है उस पैटर्न को हम growing pattern कहते हैं. It can go on and on. मतलब it can be a continuous process. There is no limit to it. Now here you can see the example again 21, 41, 61, 81, then 101. After 101 is your 121, and after 121 is 141, and after 141 is 161. Again the pattern is same, that plus 20 in all the numbers. Now after 161 plus 20 that is 181. So यहाँ पर हमने क्या रूल भी क्या देखा कि हमने हर in every number we have to add 20, क्योंकि ये दो नंबर्स के बीच में कितना डिफरेंस है नंबर का, 20. हाउ विल यू फाइंड आउट द डिफरेंस? अब डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे, पहला नंबर और जो सेकेंड नंबर है उन दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको डिफरेंस मिल जाएगा. जैसे 41 माइनस 21 दैट इज इक्वल टू 20. तो हर नंबर के बीच में हमने 20 ऐड किया एंड द लास्ट नंबर वी गॉट इज 181. Now next is look for the rules and continue these growing patterns. Now all these patterns, now these are there are the growing patterns. That means the numbers will increase. Now here you have to see, now this is your 51. Next number is 56 and next is 61 and is 66. That means in all these numbers what is the difference? 56 minus 51 that is equal to 5. That means between these numbers there is a difference of 5. हर नंबर के बीच में हर नंबर कितने नंबर से बढ़ा, 5 नंबर
नंबर से आगे बढ़ा। 51 में 5 ऐड करेंगे विल बिकम 56, 56 में 5 ऐड करेंगे 61, 61 में 5 ऐड करेंगे 66, तो इसमें ऐड करने में 71, 76 एंड 81 आएगा। Next is B, 7 fill blank, 21, 28, 35 dash 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 dash. That means this is the table of 7. ये table of 7 है, या in other words you can say that 7 आप हर नंबर के साथ 7 को ऐड करते जाइए, plus 7 in all the numbers you will fill in the blank, or you can write the table of 7 itself. 7 ones are 7, 7 twos are 14, 7 threes are 21, 7 fours are 28, 7 fives are 35, 7 six are 42, 7 sevens are 49, 7 eights are 56. And see, it is a table of 7. Then see, 2, 4, 8, 16 and 32. Now here you can see every time the number has been doubled. 2, 2 का double 4, 4 का double 8, 8 का double 16, 16 का double 32. That means each number has been multiplied by 2. First number is 2, that is correct. Now the second number is multiplied by 2. 2 इस first number को अगर हम 2 से multiply करेंगे तो second number आएगा. Second number को अगर हम 2 से multiply करेंगे तो 4 2s are 8. We get the third number. Now third number multiplied by 2, 8 2s are 16. Then 16 2s are 32. 32 2s are 64. 64 2s are 128. 128 2s are 256. That means each of these numbers has to be multiplied by 2. ये pattern है. Now 12A, 13B, 14C. 12, 13, 14, तो यहाँ पे क्या आएगा 15 और 16. Then A, B, C, D and E. That means 15D and 16E. Numbers, next numbers only they are coming, and alphabet also, the next immediate next alphabet is also coming here. Now we move on to next question. As I explained you in the textbook, the question A, the same I have done here in the notebook, and the same way you will write it in your notebook. I have explained you how to get the numbers in the notebook, explained how the solution of these will come. Pattern का solution आप कैसे निकालेंगे ये मैंने पूरा इस तरीके से notebook में explain किया हुआ है, and then you will have to do it like that only. Now we move on to the second one. Look at the growing patterns. Find out what is to be added to each number to get the next number. Now here also you have to see very carefully because the difference of numbers is more here. Now 1, 3, 6 and 10. Here 1, 3, 6 and 10 numbers are given. That means 1 में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो हमको 3 मिलेगा. 3 में अगर हम 3 ऐड करेंगे तो हमको 6 मिलेगा. 6 में अगर हम 4 ऐड करेंगे तो हमको 10 मिलेगा. तो 2, 3, 4, that is the increasing order of the numbers that you have to add. अब 10 में अगर हम 5 ऐड करेंगे तो 15 मिलेगा. 15 में 6 ऐड करेंगे तो we'll get 21. 21 plus 7, 28. 28 plus 8 is 36, and 36 plus 9 is 45. That means in each number you have to add keep on increasing one number. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Up to 9 you have to add the numbers and get the next number. Now here it is 0, 2, 6 and 12. 0 के बाद 2, so 0 plus 2 is 2. 2 plus 2 is 4. Now 4 यहाँ पर आया, 2, 0 के बाद 2 आया. 2 के बाद कितने नंबर्स आए यहाँ पर आपको ये देखना है. तो यहाँ पर 6 के बाद 12 आया. 2 plus 4 is 6 is equal to 6. अब 6 में हमने 6 ऐड किया तो 12 आएगा, यानी कि 2, 4 और उसके बाद 6. 2, 4, 6 ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर आया. तो इसके बाद 6 के बाद क्या आएगा 7 नहीं 8. यहाँ पर देखिए 2 के बाद 3 स्किप हुआ 4 आया. 4 के बाद 5 स्किप हुआ 6 आया. आफ्टर स्किपिंग 7 नेक्स्ट विल कम 8. सो वन नंबर यू हैव टू स्किप एंड ऐड टू इट. नाउ 8 मतलब 12 में अगर हम 8 ऐड करेंगे तो 20 आएगा. नाउ 9 स्किप करके हमको 10 ऐड करना है. 20 + 10 30. 10 के बाद हमको 11 स्किप करके 12 ऐड करना है. 30 + 12 इज 42. 12 के बाद skip 13 and add 14 to 42, that is your 56. And 15 skip करके 16 ऐड करिए. 56 + 16 is equal to 72. यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 and 16. These are the numbers that you have to add in each number to get the next number. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16 आपको नंबर्स के बीच में ऐड करते जाना है और आपको नेक्स्ट नंबर मिलता जाएगा. पहले में 2 किया, दूसरे में 4 किया, तीसरे में 6 किया, फोर्थ में 8 किया.
10 किया, 12, 14 एंड 16. नाउ नेक्स्ट इज 1, 3, 7, 13. नाउ सी द पैटर्न. 1 के बाद 2 ऐड किया तो हमको 3 आया. 3 के बाद 4 ऐड किया तो 7 आया, मतलब 2 और 4 नंबर्स आए. 7 में हमने क्या ऐड किया, 6 ऐड किया तो 13 आएगा. अब now what is the pattern of the numbers that you have to add, that you have to see? 2, 4, 6. तो अब इसके बाद क्या आएगा, 8 आएगा. मतलब 13 में अगर हम 8 ऐड करेंगे तो 21 आएगा. 21 में अगर हम 8 ऐड करेंगे, सॉरी 10 ऐड करना है हमको यहाँ पर. 21, अब 8 के बाद कौन सा आएगा, 10 आएगा. तो यहाँ पर 21 + 10 31. 31 के बाद हमको 12 ऐड करना है तो वी विल गेट 43. और 43 के बाद 12 के बाद 14 ऐड करके 57 और 16 ऐड करके 73. द होल थिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन द नोटबुक हाउ टू फाइंड द नंबर्स. ये मैंने आपको नोटबुक में एक्सप्लेन किया हुआ है. आप ऐसे ही नोटबुक में करेंगे, खाली टेक्स्ट बुक में यू विल फिल दीज नंबर्स. नाउ 2, 3, 6, 11, 18. 2 + 1 3, right? 3 + 3 is 6. 6 + 5 is 11. 11 + 7 is 18. That means 1, 3, 5 and 7. What is the increasing order of the number that you are adding? 1, 3, 5 and 7. That means the next number that you have to add here is 9. That means 18 + 9 is 27. 27 + 11 is 38. 38 + 12 is 51. 51 + 13, सॉरी 11 के बाद यहाँ पे 13 आएगा, दैट इज़ 51. 13 के बाद 15 आएगा, दैट इज़ 66. एंड देन 17 आएगा, दैट विल बी योर 83. सो इन ये ऑड नंबर्स आपको यहाँ पर प्लस करने हैं और यहाँ पर इवन नंबर की पैटर्न्स आपको प्लस करने हैं. और यहाँ पर जो है सिंपल इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. एवरीथिंग आई हैव डन इन द नोटबुक, सो गो थ्रू इट वेरी केयरफुली. नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज. Now next page, there's a new topic, that is your secret messages. What you have to do is, you can see that there certain numbers are also written and certain alphabets are also written in this. You have to find that message from the numbers. You have to find out the message and write that secret message. This is very easy. Amrita and Paritosh are writing secret messages. Now here you can see this 2, 3W, 3H, 3E, 3R, 3E, then 3A, 3R, 3E, 3Y, 30, 3U. That means 3 के साथ 3 नंबर के साथ पूरा मैसेज लिखा हुआ है. 3 नंबर एंड एन अल्फ़ाबेट व्हाट शी इज़ ट्राइंग टू से. तो आपको क्या करना है, इसमें से सारे 3s जो है हटा दीजिए आप और 1 by 1 अल्फ़ाबेट को लिखना शुरू करिए. WHERE, दैट इज़ योर वेयर. ARER and YOU, where are you? That is the message in this. Remove all the numbers, you will get the alphabets, and those alphabets you have to write and find out the message. Now here again, 3I, 3N, 3T, 3H, 3E, 3C, 3A, 3N, 3T, 3E, 3E and 3N. So IN, in, THE, the, in the, CAN, can, TEEN, teen. I am in the canteen. So this is they have written. Now here, can you tell what they are trying to say? These are the two secret messages. Look for the patterns and find the hidden message. Now here, 1 I, 2L, 3O, 4V, 5E, 6Y, 7O and 8U. Here you can see the number is increasing every time with the alphabet. Now I, LOVE, love, and YOU, I love you is the message here. Now here you can see the words are jumbled here. यहाँ पे जितने भी अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं वो जम्बल्ड है. तो इसमें से हमको मैसेज क्या निकालना है, दिस बुक इज़ फन. इसमें से ये मैसेज निकलता है कि दिस बुक इज़ फन. दिस पे कुछ अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो एक्स्ट्रा होंगे, कुछ अल्फ़ाबेट्स जो है इसके मैसेज के होंगे. तो जो एक्स्ट्रा अल्फ़ाबेट्स से आप निकाल दीजिए, जैसे THIS दिस, तो इसके बीच के जो A, B, C and D, ये सारे एक्स्ट्रा अल्फ़ाबेट्स निकाल दिए. तो दिस, नाउ दिस बुक, नाउ BOOK,
ओके बुक, और बाकी जितने भी अल्फ़ाबेट है, एच है, जी है, एफ है, ई है, रिमूव दैट। देन आई एस एल जे रिमूव कर दीजिए। फन, एफ एफ यू एन फन को छोड़ के के एल और एम रिमूव करिए। सो एफ यू एन फन, सो दिस book is fun. So this way also you can find the secret message. Now here you can try and make your own secret messages that you will do in homework. 3 secret messages either with the alphabets or with the numbers you can do. Now next is very important topic is your even and odd numbers. Now these even and odd numbers you have to write this whole grid, number grid, in your notebook one time. Now here you can see 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81 and 91 पूरी 1 की लाइन एक साथ दी हुई है। ये सारे ऑड नंबर्स हैं। उसके बाद 2, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92, सो 2 की लाइन है। वैसे 3 की लाइन है कि 3, 13, 23, 33, 43, फिर ये 4 की लाइन 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ऐसे पूरी लाइन दी हुई है 100 तक के सारे नंबर्स की। 1 is even, see the yellow color is even line and the blue color is odd line. This is odd and this is even. This is odd, this is even, odd, even, odd, even, odd and even. Yellow is even and blue is odd. So half these numbers are in yellow. What pattern do we see in these numbers? Continue the same pattern and fill in the blank. Now from 96 we have to start. So we will see the line of 96. 96 के बाद क्या आया? 86, 96, then 98, 96, 98 और 100 आया। फिर 100 के बाद क्या आएगा? 102, 104, यानी कि इन सब में हमको क्या ऐड करना है? 2 ऐड करना है। 96 प्लस 2 98, 98 प्लस 2 इज 100, 100 प्लस 2 102 प्लस 2 104 प्लस 2 106 प्लस 2 108 प्लस 2 110 प्लस 2 112। इसमें सब में प्लस 2 करके आंसर फाइंड आउट करने हैं। यू विल गेट द नेक्स्ट नंबर। जो नंबर है उसकी में प्लस 2 करिए, आपको आगे का नंबर मिलेगा। इसमें प्लस 2 करिए, ये नंबर मिलेगा। इसमें प्लस 2 करिए, ये नंबर मिलेगा। ऐसे आपको ये कंप्लीट करना है। हाउ फार कैन यू कंटिन्यू दिस पैटर्न? दिस इज अनलिमिटेड, इसमें कोई भी लिमिट नहीं है। दीज नंबर्स हैव अ स्पेशल नेम, एंड व्हाट इज द स्पेशल नेम ऑफ दीज नंबर्स? दे आर कॉल्ड एज the even numbers. What is the special name given to these? These are the even numbers. Do you have any even numbers end with 3 or so और 5? कोई भी ऐसा इवन नंबर है जो 3 या 5 से एंड होता है? नो, नॉट अ सिंगल नंबर इज देयर दैट एंड्स विथ 3 और 5। जो 3 और 5 से एंड करने वाले नंबर्स होते हैं वो अलग नंबर्स होते हैं। व्हाट इज डू द इवन नंबर्स एंड विथ? इवन नंबर्स कौन कौन से नंबर से एंड करते हैं? ये देखिए, इजी इवन नंबर है तो हम यहाँ पर देखते हैं इवन नंबर्स किस किस से ऐड कर। 0 से करेंगे, 2 से करेंगे, 4 से करेंगे, 6 से करेंगे और 8 से करेंगे। तो 0, 2, 4, 6 and 8, these are the numbers with which the even numbers end. 0, 2, 4, 6 and 8, इन सारे से इवन नंबर्स एंड करते हैं। मतलब जैसे 42 हुआ, 44 हुआ, 46 हुआ, 48 हुआ एंड 50, दैट मीन्स इन द एंड 2, 4, 6 and 8। See 40, then 42, 44, 46 and 48, in end में क्या आया? 0, 2, 4, 6 and 8. So with these way the even numbers end with these numbers. Look at the pattern of the numbers in blue. Continue the pattern in the blank. Now 98, 101. Now here you can see again 98, 99, 100 and 101. That means 3 numbers add किए। when 100 and 101 2 numbers ऐड किए। when यहाँ पर भी 2 numbers 101 के बाद 102 and 103, 104, 105, 106, 107, 108 नहीं 109, फिर 110 नहीं लिखना है, 111 लिखना है, फिर 112 नहीं और 113 लिखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि what do these numbers with blue end? ब्लू कौन से नंबर से एंड करता है? 1, 3, 5, 7, 9 इससे एंड करता है। जो ब्लू लाइन है हमारी वो किससे एंड करते हैं? यू कैन सी 1, 3, 5, 7 and 9. The blue line ends with such numbers. So they are called as
All these numbers end with 1, 3, 5, 7, 9 are called as the odd numbers. What are they called as? Odd numbers. That means there are two types of numbers. One is the even number and other is the odd numbers. Odd numbers end with or starts with, start भी हो सकते हैं और end भी हो सकते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9. एंड तो इसी से होंगे 1, 3, 5, 7, 9 से. द सेम वे इवन नंबर एंड्स विथ 0, 2, 4, 6 and 8. So two types of numbers, even numbers and odd numbers. Write all the odd numbers between 400 to 410. 400 से 410 की 400 even number हुआ, 401 1 से शुरू हुआ, 403 ending with see the ending 405 and 407 and next is your 409. Then write all the even numbers between 155 to 165. 155 के बाद क्या है, 156, 158, 160, 162 and 164. अगर हम 166 लिखेंगे तो वो इससे बड़ा हो जाएगा. हमको ये दो 55 और 65 के बीच के ही नंबर्स लिखने हैं. 155 से 165 के बीच में, तो इस तरीके से वो एंड होंगे. Now if we add 1 to any odd number we will get an even number. Always remember, अगर हम odd number में अगर 1 ऐड करेंगे तो even मिलेगा, and if we add 1 to any even number we will get an odd number. अगर हम इसमें 1 करते हैं तो odd मिलेगा, इसमें 1 ऐड करते हैं तो even. Even number में +1 करेंगे we will get an odd number. Odd number में +1 करेंगे we will get an even number. What do we get if you add an even number with an odd number? अगर हम even number के साथ supposing अगर हम 42 और 45 को add करते हैं, now this is your even number and this is your odd number, तो 8 + 2 7 we will get an odd number. यहाँ पर हमको odd number मिला. इवन नंबर के साथ अगर हम ऑड नंबर को ऐड करते हैं तो नॉर्मली वील गेट एन ऑड नंबर. नाउ नेम्स इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर. Adi has to arrange this list so that the names starting with A comes first and then comes those with the B, C, D and so on. Number these names in order in which they will come. तो हमको इस ऑर्डर में नंबर्स लिखने हैं जिस ऑर्डर में ये सारे आएंगे. तो यहाँ पर आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पता है, ए के बाद बी, बी के बाद सी, इस तरीके से सारे नंबर्स लिखे हुए, सी डी ई एफ जी एच आई जे के. और यहाँ पर द लास्ट वन इज़ दैट जलज इज़ प्राउड टू हैव अ स्पेशल नेम. तो he says that he if you read it backwards it is still the same. मतलब कि ये नंबर ज ल ज ऐसा है कि JALAJ अगर हम यहाँ से पढ़ेंगे तो भी जला जाएगा, यहाँ से पढ़ेंगे तो भी सेम आएगा. मतलब बोथ वेज यू कैन रीड लेफ्ट साइड और राइट साइड, यू विल गेट द सेम आंसर. ज ल ज इधर से भी, ज ल ज इधर से भी. विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स यू हैव एट द सेम पैटर्न, मार्क इट टिक. अब यहाँ पर जो नेम है जैसे हर्ष है HARSH, तो HARSH इधर से भी आना चाहिए, तो दिस इज रॉन्ग. अन्ना ANNA है तो ये ANNA, दिस इज ऑल्सो राइट. So this is also correct, ANNA and ANNA. Then KANAK, कनक is also right. KANAK दोनों तरफ से कनक आता है, इधर से भी KANAK और KANAK, this is also right. Then MUNNA, this is not right. AN यहाँ से ऐसे आएगा. और उसके बाद next is your JAINI, JAINI, तो INIJI, तो this is also not right. So two Anna, ANNA and KANAK, these two are the ones from both the sides you can read the same answer, get the same name. और यहाँ पर आपको खाली नंबर्स ही लिखने हैं. अल्फ़ाबेट के और हिसाब से आपको नंबर लिखने, जैसे A में 1 लिखेंगे, B वाले नाम में 2 लिखेंगे, C वाले नाम में 3 लिखेंगे. फिर डी नहीं है तो EFG में 4 लिखेंगे. फिर HIH है तो H में 5 लिखेंगे, और H नहीं है, H है 4, yes H is there 5,
देन जो है H के बाद I नहीं है तो J में 6 लिखेंगे. इस तरीके से आपको नंबर्स लिखने हैं. So I hope dear children you have understood how to do this. Now today we'll complete in the workbook, textbook only. On the next turn we will be doing the workbook. But you all have to do question even and odd numbers. This whole page you have to write it in your notebook. Even and odd numbers and these all the patterns that we have done. ये पूरे पैटर्न सारे आपको ये लास्ट पेज भी और उसके अलावा आपको जो ये पेज हमने जो किया हुआ है ये पूरा पेज आपको नोटबुक में एक बार लिखना है with the solution as I have shown you. Till then we meet on the next turn. Bye bye and have a nice day.